Well, a very good afternoon. Welcome to Football Today. As usual, I'm joined by Opuru, and we are here to discuss yet another controversy which has been laid down by FIFA, which is the introduction of the blue card. As of the 1970s World Cup, there were two cards which were introduced in the 1970s. That was the yellow card, which was there for a caution, and the red card, which was there for a suspension for that game as well as the following game. And this week FIFA has declared like they will be, introducing the blue card into the into the world of football, and obviously it has its own set of rules, its own set of regulations, and already before the utilization of it in a practical match, it has already created controversies. In fact, lots of controversies, and we are here to discuss them. And well, Abhinav, what do you feel about this card? I mean, what controversies can it create in the days to come? Yeah, thank you, Shumam. Welcome to you also. Welcome to our viewers. Thank you for your channel. Sorry. And हाँ, ये blue card it's very new. अभी ये कुछ ही दिन पहले आया है. It's absolutely new. FIFA has introduced this blue card suddenly out of the box. It just dropped like a bomb to every football fan, like to the entire football world. I must say. There was two cards as of now, yellow card and red card. अचानक से ये blue card कहाँ से आ गया? मुझे I have no idea. What like thinking is behind bringing this particular card? That also is like very dicey. क्या सोच के ये कार्ड इंट्रोड्यूस ये फीफा वाले कर रहे हैं? आई हैव नो आइडिया. पर हाँ, दिस विल क्रिएट सम प्रॉब्लम. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि देखो यार, कंट्रोवर्सी तो होगा. किस बेसिस में ये कार्ड दिया जाएगा? ऑन व्हाट बेसिस आर प्लेयर्स गोइंग टू बी चार्ज अ ब्लू कार्ड? नो वन नोज एज ऑफ नाउ. यहाँ पे जो मतलब कुछ ही गाइडलाइंस अभी दिए गए हैं, मतलब व्हाट आर द लाइक speculations which are coming up regarding the blue card is that if a player gets a blue card, 10 मिनट के लिए वो सस्पेंडेड हो जाएगा for the from the match. He has to go to the sideline and has to be in the sideline. He cannot participate in the game, and this will Right. happen if the referee probably thinks it is like accent failure, मतलब accent का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, या tactical भी हो सकता है. अभी तो क्लियर नहीं है फिलहाल. Don't exactly know what are the like reasons behind which a referee can give a blue card. पर हाँ, ये अभी स्टार्ट होने ही वाला है प्रोबेबली, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज व्हिच आई सॉ लास्ट डे, प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द लोअर लेवल्स ऑफ फुटबॉल. मतलब जो सेकंड डिवीजन जो लीग्स है ना, Right. अभी जो पॉपुलर नहीं है, वहां पे पहले फीफा आई थिंक इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस रूल ऑफ ब्लू कार्ड. पहले कुछ मैचेस में वो देखेंगे व्हाट इज द आउटकम, लाइक क्या सिनेरियो अराइज कर रहा है, the players happy or not, the managers how they are changing. मतलब बहुत सारे चेंजेस होने वाला है. अगर ये अचानक से आ गया तो मैनेजर्स हैव टू थिंक लाइकवाइज कि चलो यार, ऐसा भी हो सकता है मैच में आई एम डाउन टू प्लेयर्स 10 men Right. इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, एंड 10 भी नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 9 भी हो सकता है ना, क्योंकि अभी तो Hmm. स्पेसिफाई नहीं किया गया है. पर पकड़ ले कि एक प्लेयर को ब्लू कार्ड मिलता है 21st मिनट में. ठीक है, हम आस्किंग यू, Right. मतलब आस्किंग टू माय ऑडियंस आल्सो, कि अगर 21st मिनट में एक प्लेयर को पकड़ ले हो कि ब्लू कार्ड मिल जाता है, फिर 25th मिनट में उसी टीम का एक और प्लेयर विल ही बी अगेन चार्ज विद अ ब्लू कार्ड? ऐसा होगा? एंड लाइक व्हाट्स द लिमिटेशन, मतलब व्हाट विल बी द काउंट, मतलब व्हाट काउंट कैन इट गो अप टू अ मैक्स, क्योंकि इसका तो कोई लिमिट सेट नहीं किया अभी. एंड ऐसा तो नहीं है कि एक प्लेयर अगर ब्लू कार्ड मिल जाए तो द नेक्स्ट प्लेयर वोंट डू एनीथिंग रॉन्ग इन द नेक्स्ट मिनट. इट कैन हैपन, राइट? So there has to be certain guidelines, certain rules. So I just like to know from you, मतलब तुझे क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होने वाला है? How is FIFA going to do it? देख अभी, for any match to continue in any level of football, there has to be at least 6 men, right? Hmm? So I feel that the maximum number of blue cards that a referee can show to a team, it should be five. Because if he shows more than five yellow cards, suppose there is a 10-minute ban, right? Within that 10-minute span, okay, every other player of that team is misbehaving or doing something which is not expected of him. So, I Right. mean, what's the limit there? Obviously, if that limit is more than five, so I mean a team will be left with only five players there, right? So that is not, I mean, possible to continue that game. And Exactly. moreover, I mean, देखो बहुत सारा सिचुएशंस आ सकता है अभी, जैसे कि किस हद तक
फाउल जो होगा या कुछ मिसबिहेव होगा किस हद तक, मतलब एग्जैक्टली। जाने के बाद येलो होगा या ब्लू होगा। रेड तो ठीक है, रेड इज अ रेड क्रिमिनल तो ऑफेंस और डिबेटेबल, हाँ रेड तो अलग है, वो हाँ, कीप रेड हाँ। ठीक है, वो हाँ टैपिंग कर दिया ठीक है, कुछ गाली गलौज दे दिया वो तो ठीक है, वो इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन अप टू व्हाट लिमिट, आई मीन व्हाट इज द द बेंचमार्क ऑफ अ ब्लू कार्ड एंड व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ अ येलो कार्ड। ओके, मतलब, आई हाँ मीन दैट मतलब इज अ ब्लू वेरी कार्ड येलो कार्ड कंट्रोवर्शियल कब इशू। होगा, मतलब व्हाट विल डिफरेंशिएट दिस ब्लू कार्ड फ्रॉम अ येलो कार्ड, व्हाट ऑफेंस एग्जैक्टली विल एंड टर्न अ ब्लू कार्ड इनटू येलो कार्ड ऑफेंस। right. I mean, look, I mean, yellow card in some way is similar to a red card because if a player can get yellow cards in consecutive matches, he will miss the next match, right? हाँ हाँ So बिल्कुल। this is, I mean, for blue card also, there should be a rule like if a player gets blue card for 2 or 3 consecutive matches, a certain ban or something will happen in the corresponding match or that particular match only. So I mean, FIFA hasn't yet clarified. I mean, anything regarding this. I mean, what is the first of all, what is the limit, and what is the mark? Which I mean, what is the difference maker between these two cards, right? So obviously there are a lot of controversies and a lot of speculation surrounding this blue card, and I am pretty sure in the world of football we already have a lot of controversies with the VAR decisions. We have a lot of controversies with the offside decisions in mostly in EPL. Okay, so introducing yet another controversial issue in the world of football will create बिल्कुल more and more speculations. So I don't know. I mean, it's ultimately hampering the main motto of playing football, as far as I am concerned, right? Because at the end of the day, we are here to witness a football match. Be it we, I mean, obviously players need to maintain their etiquettes and maintain the ethics of the footballing game, right? But I mean these are just added disturbances and added I what to say, I mean मतलब ये these are अननेसेसरी है, मुझे लग रहा है इट इज unnecessary अननेसेसरी। things which are being added to the which are being added to football. So I mean it's इसकी no वजह way से back. कंट्रोवर्सी होने वाला है, इस दिस कैन ओनली Huh. क्रिएट कंट्रोवर्सी बिकॉज लाइक ऑन व्हाट बेसिस रेफरी विल बी जजिंग दैट पर्टिकुलर प्लेयर टू गिव अ ब्लू कार्ड। एंड मेरा तो एक और सवाल है, कैन अ प्लेयर गेट टू ब्लू कार्ड्स इन अ सिंगल मैच? ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब पकड़ ले कि कोई प्लेयर फर्स्ट मिनट से शायद, या ऐसा पकड़ लो, हम वी आर जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, फिफ्थ मिनट में एक प्लेयर इज गेटिंग चार्ज बाय अ ब्लू कार्ड, ठीक है, रेफरी ने सोचा कि चलो इसका एक्सेंट का कुछ इसने गलत इस्तेमाल किया, आई एम गिविंग अ ब्लू कार्ड, फाइन। Right, वो 10 मिनट के लिए पिच से बाहर चला जाता है एंड ही right, रिटर्न आफ्टर द 15th मिनट एंड ही रिजॉइन्स द गेम ऑन द 16th मिनट, ग्रेट, दैट्स ऑल राइट, सॉर्टेड। What if that same player again commits a similar kind of a thing, hmm. and will he be charged a same blue card once again and will he be out for again 10 minutes or will that turn into yellow card? ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा कुछ रेगुलेशंस फीफा ने अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं किया है मुझे लगता है, पर दैट इज आल्सो वेरी, मतलब मुझे नहीं पता, बिकॉज ये सवाल भी उठना चाहिए कि कैन अ प्लेयर गेट टू ब्लू कार्ड्स इन अ सिंगल मैच? Right. And moreover, I mean, as I said, right, if a player gets 2 yellow cards consecutively, he misses the next match, right? एग्जैक्टली So, I mean, एग्जैक्टली। will there be any sort of similar punishment for consecutive blue cards in the same match or in a different match? I mean, lots of situations can add, a lot of permutations and combinations can be done with these 3 cards. I mean, एग्जैक्टली। moreover, if a blue and yellow card combined, if a player gets a blue and yellow card combined, then what will be the outcome? Okay, we know एग्जैक्टली, two हाँ yellow मतलब cards. ये भी तो बात है, ये सही पकड़ा, ये दिस इज एब्सोल्युटली हाँ, स्पॉट ऑन, एग्जैक्टली। देख कितना सारा सिनेरियोस हमारे सामने आ रहा है। पकड़ लो एक प्लेयर बिल्कुल, को येलो कार्ड मिल गया 45th मिनट हाँ, में, इन द सेकंड हाफ ही कम्स आउट, and the 55th minute he again he is considering a blue card now, so then what? right. इसका क्या Right, आउटकम we होने all know 2 yellows turn into one red. So हाँ, does 2 blue turn blue into one card yellow? I yellow, mean, बिल्कुल। what तो lot of ये permutations and combinations right there. ये क्या ही हो रहा है पता नहीं, पर हाँ ये दिस इज न्यू, वी विल लाइक आवर ऑडियंस, आवर व्यूअर्स टू प्लीज लेट अस नो मोर अबाउट दिस। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दिस ब्लू कार्ड? इज इट गोइंग टू हेल्प फुटबॉल एट ऑल और इज इट गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर कंट्रोवर्सीज एंड न्यूसेंस इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल? आपको क्या लगता है? हमको कमेंट सेक्शन में वो बोलिए, योर व्यूज मैटर टू अस। एंड शिफ्टिंग फ्रॉम दिस ब्लू कार्ड to very two like super matches which was played last day, जिनका हमने वॉच along किया था last day, and nothing more to say, क्या ही बोले। अभी मैड्रिड has won very comfortably 4-0 thrashing victory
Bellingham scoring twice, Rodrigo, Vinicius, and Vinicius का first goal that was brilliant, out of this world. एंड हाँ, थिंग्स आर ग्रेट फॉर मैड्रिड. ऐसा नहीं लगा कि टेबल टॉप क्लैश हो रहा है, ऐसा लगा कि लाइक नॉर्मल, मतलब टेबल टॉप टीम इज प्लेइंग समवन हु इज लाइक बिलो 10th और 11th पोजीशन, ऐसा कुछ लग रहा था मैच को देखकर. एंड स्टैटिस्टिक्स देख के भी यही पता चल रहा है कि ऐसा ही हुआ है. और हाँ, डोमिनेटिंग तो है, प्लेयर्स फुल नहीं है, दे डू नॉट हैव द फुल स्ट्रेंथ, बट स्टिल डोमिनेट किया है. एंड नाउ अभी अभी तू बोल, मतलब वेर यू एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ डोमिनेंस फॉर मैड्रिड against Girona, keeping in mind they do not have the full squad strength? Actually, I was a bit surprised because I already had predicted that Girona would not be able to continue the form in which they are in right now till the end of the season, because obviously they don't have that experience. I mean, winning a league in any form, right? So obviously, I mean, Real Madrid have their experience, they have their depth in the squad. Obviously, they have injury issues, but still, I mean, they have their required depths, which we have already seen in the previous matches. In spite of having so many injuries, they have, found a way to at least draw the match against Atletico Madrid. So, I mean, yeah, I mean, I was a bit, surprised that Girona didn't have any shot on target. It was just absolute domination from the part of Real Madrid. And Bellingham, what to say, he's a gem of a purchase from, Real Madrid. And kudos to Perez for that. Unfortunately, he got injured. Probably he will be out for a month. ये तो एकदम ही मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड लेटेस्ट था. न्यूज, ये फैब रोम का लेटेस्ट न्यूज है. ही विल बी नॉट प्लेइंग फॉर द लाइक कमिंग 2 or 3 weeks according to the Madrid like medical team, and probably they are expecting him to return on the like Leipzig second return leg, probably the UCL का जो सेकंड लेग है Leipzig के साथ, तभी उसका रिटर्न शायद होगा, ऐसा सोच रहे हैं वो. अलॉन्ग विथ रूडिगर, राइट. वो भी अभी तक नहीं है, वो भी शायद उसी दिन लौटने वाला है या उसके बाद पहले, पता नहीं अभी. पर हाँ, दिस इंजुरी इज वेरी कंसर्निंग. इट्स लुकिंग लाइक द सीजन ऑफ जिनादिन जिदान लास्ट वन, जहाँ पे राइट. इतना सारा इंजुरीज था, टर्निंग सिमिलर लाइक दैट. पर हाँ, ये अभी ऐसा ही है. पर रियल मैड्रिड आर लाइक दे हैव अ 5 point कुशन, तो ये एक एडवांटेज बेलिंगम अभी देखे गया है. वी हैव टू कैरी ऑन दैट. And coming from like a Obviously. Real Madrid perspective, an ex Real Madrid player जो अभी मैनेजर है टू अ वेरी सक्सेसफुल टीम, एंड दे आर लाइक डोमिनेटिंग. जो हमने सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये हो सकता है, पर हाँ चलो, ये हो चुका है. बायर्न हैव लॉस्ट. दिस इज मिरेकल, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज, मतलब क्या ही बोलूं, दिस इज ह्यूज, दिस इज एब्सोल्युटली ह्यूज. बायर्न लेवरक्यूजन thrashing victory. मतलब am I wrong? Correct me if I'm wrong. No, bro. I mean, from every aspect, from attack to defense to midfield, I mean, everything was just inch perfect for Leverkusen. And I mean, huge respect for Alonso, because obviously, I mean, managing this team, which probably finished ninth or 10th the previous season, as far as I can remember. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ Okay, and ऐसे ही कुछ था. making, yeah, and taking them to the top of the table, defeating Bayern in their home ground with, I mean, 3-0 victory. Moreover, taking a point out of the Bayern match at Allianz Arena. Okay, I mean, it's been a dream season for Leverkusen in every aspect, and still now they have been unbeaten. We are almost 60 to 65% done with the season, and still now they are unbeaten. And I mean, it's very admirable. I mean, the Invincibles, I mean, from England, that record could be at risk in Germany. हाँ, ये तो अरे यार, दिस इज समथिंग, मतलब आई डोंट थिंक एनीवन हैज स्पॉटेड दिस एज ऑफ नाउ. दिस इज अ ग्रेट स्पॉट, आई मस्ट से यार. दिस इज कुडोस टू यू मैन. हाँ, पर ये तो मतलब ये सही है. मतलब आई डोंट थिंक किसी और लीग में भी ये है. मतलब आई डोंट थिंक इट हैज बीन डन एवर. मतलब जीरो लॉस, Right. डोंट थिंक इट हैज हैपेंड एवर अदर देन आर्सेनल. सो हाँ, वो बोल सकता है कि वो रिकॉर्ड डेंजर में. बट जस्ट लेट मी जस्ट गिव यू सम कंफर्ट ऑफ जोन ओवर देयर. दिस इज बुंडेसलीगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता Obviously. And moreover, it would be great to have a Leverkusen squad, okay, writing their names beside Arsenal and defeating Bayern, most importantly, after 11 consecutive years. है. एंड So, I वेरी mean, that आइकनिक, would be great. आर्सेनल का एक प्लेयर भी है यहाँ पे, तो ये ऐसा भी बोल Exactly. सकता है कि चलो एक गनर भी है वहां पे, जिसके इन्फ्लुएंस से ये हो गया. ठीक है ना. बिल्कुल. एंड हैरी केन, टॉकिंग अबाउट हैरी केन, last 11 years Bayern Munich have been winning the league. He hasn't had anything, any success by playing for Spurs.
उसने सोचा कि चलो वो मैड्रिड जा सकता था, ही कुड हैव गॉन टू मैनचेस्टर सिटी, ही कुड हैव गॉन टू एनी क्लब, पर उसने चूज किया क्या, बायर्न म्यूनिख की। चलो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे गोल्स भी बहुत सारे मिलेंगे, आई विल बी स्कोरिंग मच मोर गोल्स इन कंपैरिजन टू प्रीमियर लीग, एंड फॉर श्योर प्रोबेबली जो मेरे पास अभी है नहीं कि चलो एक लीग टाइटल, वो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि बायर्न को लीग मिलेगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। ये उसने सोचा, पर ये सोच सोच ही रह गया। अभी ये उसके लिए हकीकत तो होने वाला नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि द मोस्ट टफ गेम फॉर लेवरक्यूसेन इज डन, नाउ इट्स Right, लाइक इन देयर हैंड। इफ मतलब अगर यहाँ से उन लोगों ने लीग नहीं जीता, फिर आई right. डोंट नो, मतलब दिस विल बी अ बिग अपसेट, मतलब फिर से ये प्रूव्ड हो जाएगा कि चलो ये बायर्न ही जीतने वाला है। पर यार दे Right. They शुड have a विन, 5 point difference at the top, right? huge, this is huge, and considering four less matches in comparison to other leagues, Right, right, the right, job right, becomes much right, more easier, I right, guess। यहाँ पे गेम वीक्स थोड़े कम है, अदर लीग्स में थोड़े ज्यादा होता है, तो यहाँ पे भी एक right. ये एडवांटेज है। एंड Hmm, दूसरे कॉम्पिटिशंस में भी बायर्न लेवरकुसेन अभी है नहीं, हाँ डीएफबी पोकल में वो है, पर द अदर hmm, यूरोप कॉम्पिटिशंस आई डोंट थिंक दे आर राइट नाउ competing in any of them। hmm, I may be wrong, they can be there, but I don't think they are right now in Europe right now। hmm. तो हाँ, उनके लिए तो एक एडवांटेज है, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग लाइक एज इफ दे आर वॉन द बुंडेसलीगा लास्ट डे। Right. तो हाँ, टू टेबल टॉप फिक्चर्स जो हमने सोचा था टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट एंटरटेनर फॉर अस, पर हाँ एक वन साइडेड हो गया, ऐसा कुछ था। मैड्रिड winning convincingly, Leverkusen winning convincingly, and they are sitting comfortably right now at the top with a 5 point difference, Bundesliga and La Liga में respectively। हाँ अभी तक तो यही है the news of Bundesliga, La Liga and blue card। We'll like your opinions as well regarding the blue card, which is very controversial according to me, कि फीफा ये भाई क्या ही कर रहा है, why are they bringing this at all, is this necessary at all, I don't know। प्लीज बोलिए हम कमेंट सेक्शन में, what do you think of this, and what do you think of Reals and Leverkusen's performance in their respective like top of the level table clashes, and up to you now। So yeah, I mean that's it for now. Well, we had a interesting game week, actually a double game week between the table toppers from Spain as well as the table toppers from Germany, where eventually the table, I mean the team which was leading at the top of the table, have set their points tally to a 5 point difference between their second counterparts. So obviously, and apart from the matches, the controversial blue card is always in the headlines in nowadays. And obviously, we will, as soon as we get more updates regarding the blue card, we will obviously inform you, and do like, share, and subscribe to our channel, and press the bell icon to stay updated with our content. And yeah, stay healthy, stay fit, stay fine, stay well. Good night. Peace out.